first. So, good morning, everyone. Here, Dr. Bandoo Chatale from Anandi Foundation. So, it is my pleasure to introduce our esteemed speaker, Dr. Prerna Ganvir. Madam currently working as an assistant professor at esteemed organization SVKM Dr. Panuben Nanavati College of Pharmacy, Mumbai. Dr. Prerna has completed her B Pharmacy in 2011 from Technocrat Institute of Technology. Then she has completed his master in 2013 from prestigious Institute National Institute of Pharmaceutical Education, Raebareli. Then Madam has completed her PhD take from prestigious and elite Institute of Chemical Technology, Mumbai, under the able guidance of Dr. Professor Chatur sir. Madam has research interests such as process chemistry and more core area is medicinal chemistry. Madam has received very prestigious fellowship, DST Women Scientist Fellowship, and a great thing about Madam is that Madam have 10 international publications, and Madam has 1 year of industrial experience and 3 years of teaching experience with this prestigious organization. And Madam qualified GPAT NIPER with very good rank. So without taking much time, I request our esteemed speaker to take a session. Yeah, thank you so much, Madam. Thank you so much. Thank you, Bandhu, for such a nice, warm welcome. I'll just present my slide first. Yeah, that will be great. Is my slide visible? Yeah, yeah, Madam, perfect, perfect. You can proceed now. Okay. Yeah. Yes, ma'am. Okay. So, as you are aware that this is GPAT orientation lecture. So I'll be just giving an introduction. What is GPAT? Most of you must be knowing, but those who don't know, those are in second year TY, just gone to TY, need a little introduction about what is GPAT, who is conducting GPAT, what are its cutoff, what are its percentile, all the pre-information that you all need to know. Okay, so my table of content or what all the session would contain is what is GPAT, importance of GPAT, exam structure, syllabus overview, preparation strategy, because now it is 25th of May. So you are just left with 10-15 days. So how could you utilize these 10-15 days? Obviously, this would not be enough. But how could this 10-15 days can give you a fruitful result? Top resources which you could refer, time management tips, common mistakes to avoid, success stories of few GPAT already done, as well as ours. So, starting with what is GPAT? It is Graduate Pharmacy Aptitude Test. At our time, we have done in 2011. At that time, GPAT was conducted by AICT. So it was a written test, not the online test. Now it is conducted by National Testing Agency, NTA. So it is a computer-based format test. Why do we do GPAT? Is it is used Madam, for I MPharm think your admission. PPT is not moving. Can you check it once? I think, yeah, it's moving. Thank you, thank you, thank you. Yeah, Hmm. proceed. Okay. So it's used. Why do we do GPAT? Is because it is used for MPharm admission in top institutions and admission and eligibility for scholarship. All the top institutions require qualification for GPAT. Without GPAT, you cannot admit to that college, even if you are paying a hefty fees. They are not going to admit. So you require, if it is top institution, top 10 colleges would require your rank in below 100. And for core subject, it could be below 20 rank also. Core subject, as I've said, pharmaceutics, pharma,
chemistry, pharma analysis. So these require rank below 20 to 30 in top 10 colleges. So admission to Premier Institute, NIPER, ICT. For giving NIPER also you required at least GPAT qualified. GPAT would give you a monthly stipend of 12,400. It also opened door for public sector DRDO, but also if you are preparing for, or if in further if you are going to prepare for drug inspector, the same study for GPAT could help you in that, in qualifying DO position, that is drug officer position, drug inspector position, research and development roles, and pharmacy industry positions with the MPUM qualification. Now, GPAT exam structure for this year, it is on 25th of May 2025. It contains 125 multiple choice question. Each question contains 4 marks. If you do a one correct question, you will get 4 marks. If you go for one wrong answer, you'll get a -1. It means it has a negative marking also. The duration is of 3 hours. Total marks is 5. There is no sectional cutoff, and the questions are mixed. It means it could be pharmaceutics, cognosy, chemistry, jurisprudence, all, no such sectional cutoff. So now you can ask me what is cutoff, ma'am, because it's always everywhere it is written 96 percentile, 94 percentile. Every time, each year, this percentile is going on increasing. Before it was 84, but in 2024, it was 96 percentile. Now, what do you mean by percentile is? Percentile is, it is a comparative percentile. If a top person is getting 300 marks and you, in compared to your marks, it is 96%. So the cutoff of 2024 for journal category was 163, EWS 122, OBC is 133, SC 103, ST 76. And every year it is going on increasing. Before it was 150, now it has reached 163, and obviously this year it's also going to increase. And this is the cutoff that would get you qualified to GPAT. If you want to be in top 10, you have to have marks somewhere around 300 out of 500. Okay. So as I have told you, for toppers or top 10 rankers, you need to have marks of around 300. So you have to do questions for, you have to rank for questions around 70 question. If you'll do right, you'll get marks of around 280. 75 questions, you'll get around 300. So if that much, 75 questions out of 120 questions, even out of 125 questions, you are doing 70 questions, 75 questions, right? You are scoring around 300 and you are in top 10 ranks. But if you only opt for 45 questions out of 125, then you are scoring 180, which is very above to the cutoff, or it is touching a cutoff marks. You are getting qualified. So you have, if you are third year, you are thinking we are in third year, because third year, from this year only, they have allowed to exam can be given by third year also. So agar you people are in third year, you can focus on, you are thinking that we are lacking, we haven't, 1 year we have doesn't have any analytical background जो हमें 7 sem में सिखाया जाता है, UV and MRIR, that we don't have the background of that. It's okay, you just have to focus for that 45 question and you are in GPAT. And this, your GPAT qualification, your scorecard is valid for 3 years. You can anyhow give for in final year also, and that would be valid. And if you, any by chance, if you are not able to give in final year, this third year scorecard is also valid for coming 3 years. So it's always a win-win situation if you are starting early. If you are in final year, you can focus, if it depends upon your focus, whether you want to qualify or whether you want to be in top 10 rankers. So focus on that 45 question. It would contain the syllabus that you have done almost. So these are the syllabus overview.
That is pharmaceutics. What can come in pharmaceutics? Dosage form, bioavailability, Yeah, madam, drug I delivery think your system. slide is not moving. Can you stop sharing and then once share it? That will be good for us, right? Okay. Are you not able to see syllabus overview? Yeah, now it's visible, madam. Yeah. Okay, okay. Now proceed now. Yeah. Okay. Okay. So starting with pharmaceutics, it's dosage form, bioavailability, drug delivery system. That is the main focus. I'll tell you in detail also what is to be done in pharmaceutics. Pharmacology, drug action, side effects, mechanism that is to be focused upon. In chemistry, organic, inorganic, medicinal chemistry. In medicinal chemistry, you can focus on SAR. That too majorly on anti-cancer. These are CNS, ANS. These are the focus area from where questions are mostly asked. Pharmacognosy, plant-based drugs that too focus on alkaloid and glycoside. Every year, one or two questions are from alkaloids and glycoside. This chapter you cannot leave. Even if you are in third year, focus on alkaloids and glycosides. So these are the area which एक question तो आना ही है. Even if you have prepared hardcore everything, but prepare alkaloids and glycosides. Even if you are getting 2-3 questions out of the two chapters, that is a win-win situation. Others, biochemistry, microbiology, pharmaceutical engineering. Okay, I'll tell you about syllabus weightage analysis. What is the main thing while before starting to GPAT? पहला तो GPAT क्या होता है? What is its syllabus? Now we have got to the syllabus. Those who are in final year, they very well know about the syllabus. But this is the last minute. What you can do is high weighted subject है उसका revision. Go on revising. Go on revising. The main topics from where it comes is pharmacology, chemistry, and physics. These are the subjects from where major questions come. So from pharmacology, 25 MCQs, pharmaceutics, 20 MCQ, chemistry, 25 MCQ. So this only contains 70 questions तो यही हो. इसमें से भी if you opt 35 right, you are still up to the level. I would say if you are in third year, starting with your first and giving, I would say अगर जो नहीं आ रहा है वो बिल्कुल छोड़. Minus marking पे जाओ नहीं मत. If you don't know, leave it. When you are very much sure, opt that particular MCQ. Now coming to pharmacognosy, 15 MCQ from pharmacognosy, analysis 15 MCQ, others 25 like juris, biochem. There are other allied subjects जिसमें से 25 MCQs आते हैं. So even if you are focusing on ecology, physics, chemistry, and cognosy, that too I'll tell you what are major chunks that come, but this contains the major part. Because when you are going through the journey, even if you are in final year, अगर last 6 to 9 months से आप पढ़ा है आपने continuous पढ़ा है, then also at the end, if you require कि मैं ऐसा क्या करूं जो मेरा score बढ़ जाए, तो revise these 4-5 subjects thoroughly. ठीक है, focus on high weightage and high scoring subjects. That is, as I told you, pharmacology, medicinal chemistry, physics 20 marks, analysis micro and biochem 10 marks. So syllabus coverage. Okay, one thing more. Whenever you are starting with your studies, pharmacology and chemistry, you can do hand in hand. Medicinal chemistry. अगर आज आप एक टॉपिक कीमोथेरेपी एंटी कैंसर ड्रग का पढ़ रहे हो, उसका पूरा क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट्स, उसी टाइम पे उसका आप मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ो. उसके SARs, उसके structures, what are the structures, what are the SAR, what is the synthesis. If you are doing this two simultaneously, that would save lot of your time. When you are making your timetable, give 3 hours. If you are doing for anti-cancer, then give 3 or 2 hours right now because 15 days. तो 2 घंटे में आपको एंटी कैंसर का आपने कोलॉजी पढ़ा है तो आपको उसका केमिस्ट्री भी खत्म करना. Similar way, CNS pharmacology में sedative, hypnotic, psychotic. In chemotherapy, antibiotic, antimalarial, antivirals. General pharmacology, pharmacokinetics, pharmacodynamics.
pharmaceutics. In pharmaceutical chemistry, organic chemistry, remember if you are doing medicinal chemistry, do not forget OC. OC is also important in case of GPAT. बहुत basic question भी आता है. When you classify, we'll see later the classification of question. It is always easy, medium, and difficult. In sometimes OC questions हमें लगेगा ये बहुत घुमा के पूछते हैं. No, sometimes I think last year's made it was as Luca's reagent would attack on which alcohol. So this is a straight question. So sometimes in OC straight questions are also asked. So carbonyl compound, heterocyclic chemistry, stereochemistry, physical chemistry में thermodynamics, kinetic, electrochemistry. In pharmaceutics, dosage form as I have told you, I'll further classify them. Dosage form, tablet, capsule, parenteral. Okay. Tablet and capsule is the major chunk. जब भी आपने pharmaceutical, अगर आपने 15 days है, you are in TY, even if you are in final year, अगर आपने सोचा है कि आज मैं pharmaceutics का ये part मुझे आज करना ही करना, so it would be firstly starting with pre-formulation and then your solid dosage. You cannot leave your uh, pre-formulation as well as your tablet and capsule. Tablet and capsule हर बार 4-5 question आते ही आते हैं. So the major portion would be your tablet, capsule, then go on to monophasic dosage form, biphasic dosage form, parenterals, then coming to biopharmaceutics, bioavailability, bioequivalence, इसमें somewhere questions numericals भी होते हैं, sometimes घुमा के भी पूछा जाता है. Then coming to pharmacognosy, as I've told you, alkaloids, Hello, glycosides. sir. These two. Just you are same slide or you are moving actually? Can you stop sharing and share it once again? That will be Yeah, great. yeah. Okay, okay, okay. Now you can share once again. Yeah. Yeah. I'm just reading. Yeah. Wait. Don't wait for 1 minute. Yeah. Is it visible? Mm, Wait. Are you able to see my slide? Not. It is. Can you please share in that screen so that I able to see your screen only, not a Oh. presentation. Yeah. Go on your presentation. It will have something internet. I think lag behind. I think is that way. Yeah, guys, I wait just for said. 1 minute. It's just some technical problem. Mm. Is it visible now? Yes, perfect, perfect. Yeah, Okay. yeah. Thank you. Okay. So we were on pharmacognosy, as I've told you before also. Alkaloids and glycoside is the topic you cannot miss. You have to. Sometimes children are like, मैम prognosis थोड़ा difficult जा रहा है, मैम याद नहीं रह रहा है. Even if you are doing when you are doing mock test, you are not able to score on prognosis. But trust me, this is a subject will give you maximum marks. So don't forget to do alkaloids, glycosides. Coming to pharmaceutical analysis, for TY it would be a little difficult. You may not opt this particular section pharmaceutical analysis because major ये 7 sem में आता है. That is spectroscopy, chromatography, UV, all that comes in 7 sem. But for final year, you cannot leave UV, IR, NMR, HPLC, TLC. There are certain topics जिसके questions every year repeat होते हैं. Like in case of UV, Woodward-Fisher rule, every time one question is there from Woodward-Fisher. And this is the topic, it's like maths. Woodward-Fisher rule करना आता है तो आएगा, नहीं आता है तो it's like maths. If you know, you'll get 4 marks complete for one that particular MCQ. अगर नहीं आता है तो don't go for it. Don't take a chance. Woodward-Fisher rule is maths. So I think UV में you cannot leave Woodward-Fisher rule, instrumentation of UV, Beard-Lambert's law, because they are straight question. Structure दिया रहेगा, you have to calculate.
So these are not twisted questions. This cannot be. Like in Beers-Lambert law, they can give you twisted question, formula-based question. So you will get somewhere confused. Now there is chromophore and auxochrome. So these are the topic जहाँ से straight questions आते हैं. Bathochromic shift, hypsochromic shift, or red or blue shift. Then application of UV. In case of IR, there is functional group, range क्या होती है, principle क्या है, mode of vibration, that is bending and stretching. The in case of IR, bending and stretching, the mode of vibration, the question can be a little twisted, complicated. Coming to biochemistry, it is metabolism, carbohydrate, protein, lipids. In the case of enzyme, kinetics, inhibition. So these are high weightage topics. Even if you are in TY, even you are in final year preparation, itni nahi hui hai, start preparing from now. You, the major thing, the next I want to say is this is for long. Okay, so this I was telling you about last 15 days preparation में आप क्या क्या कर सकते हैं. Focus on ecology, pharmaceutical chemistry, Sutix, cognosing. So if you are in final year, I know you have most of you have made notes. If you are in TY, start preparing notes यानी ऐसे चार्ट बना. क्लासिफिकेशन की एक पतली सी बुक आती है. टेक दैट क्लासिफिकेशन, यू हैव टू मग इट अप. क्लासिफिकेशन ऐसा याद होना चाहिए कि रात में भी अगर पूछा जाए टेल मी दिस एंटी कैंसर ड्रग, तुमको उसका क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए. Which drug is in this category? You have to know classification. If you know classification, half of your ecology marks you can get. 5 to 10 matlab 5 to 10 MCQ you can get right only by doing classification. Take classification ki patli si book while you are traveling, mug it up the classification. This category of drug falls in this morphine category ki drug kidhar aa rahi hai. So this classification you have to mug it out. Last 15 days bhi hai, to daily you have to 1 hour give for classification reading. अगर तुमको कोई मेन में भी पूछे ये कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, यू मस्ट नो कि ये एंटी कैंसर ड्रग है, ये एंटी डायबिटिक ड्रग है, ये इस सेक्शन में ड्रॉ फॉलो. Then coming to pharmaceutical pharmacognosy, make a chart of everything. Like if you are doing tablet का सब तुम्हें पता होना चाहिए कि diluent ये है, ये उसका glidant है, ये flow property दे रहा है. Evaluation of tablets, evaluation of capsule, granulation की step क्या है, इसका एक you can make a flow chart pattern. If you are doing some machines, as in case of pharma technology, there are various types of machinery. If you are doing that, uska flow chart banana. और उसी में you can label it. This is this machine, this is this machine. If you are doing aerosol के ये valves होते हैं, इस type का aerosol में composition होता है. Make a flow chart for last minute so that लास्ट मिनट है, हमें 1 घंटे में एक टॉपिक पूरा रिवाइज करना है, तो बस हम फ्लो चार्ट देखेंगे. हाँ ये दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट थिंग्स एंड वी आर गेटिंग दैट. ये इवैल्यूएशन है, पैरामीटर्स है लिपस्टिक के, ये इवैल्यूएशन पैरामीटर्स है टैबलेट के, ये इवैल्यूएशन पैरामीटर्स है कैप्सूल के. So that you can see by that flow chart में लिखा है important, and that is all done for last 15 days. Even for अगर if you are in TY, start making your chart right now. It may happen कि यहाँ पे for this coming test you may not be getting that much marks, but for next time you have time. Start making flow charts, start making charts, classification के chart, start making a chart जिसमें तुम classification पढ़ रहे हो और उसी के नीचे तुम SAR लिख रहे हो उस particular drug का, उसी का structure बना रहे हो, उसकी synthesis पढ़ रहे हो. Like if you are doing anti cancer की जितनी ड्रग है उसका स्ट्रक्चर, उसका SAR सामने ही उस चार्ट में बनाओ एंड प्लेस दैट चार्ट इन योर रूम, सो दैट जब नेक्स्ट टाइम तुम्हारे लास्ट 20 या 15 डेज रहे, बाय ओनली बाय सीइंग दैट चार्ट यू मे नो कि हाँ ये एंटी कैंसर की ये ड्रग है, एंटी डायबिटिक की ये ड्रग है, इसका ये स्ट्रक्चर है, एंड the SAR of this is particular that, and synthesis is this. So in that case, your medicinal chemistry and your ecology will go hand in hand. This is last minute preparation. Now, because it is last 15 days, no time to open the books. तुम अभी कुछ भी नहीं कर पाओगे, बुक्स अभी डीप में नहीं जा सकते. If you are in TY, you can
start revising. You can go for Lachman. Always clear your concept. EY में हो, concept clear करो, Lachman पढ़ो, KD Tripathi पढ़ो, all the books that are main books, Morrison Boyd, all these books, start referring now. Make your notes well in advance. If you are in final year, जो भी तुमने अभी तक पढ़ा है उसके फ्लो चार्ट्स बना लो. Try making the flow charts in 5 days and next 10 days में तुम उसका revision करोगे. Flow charts अपने रूम में लगाया. Whenever you are sleeping, you can see that अच्छा, this is structure, this is SAR, this is this. This is tablet. Tablet का ये evaluation parameters होता है. Only by seeing that chart you can revise. Because अभी time ही नहीं है in depth जाके तुम पढ़ोगे. ये BCS classification, BCS class 2 की drug है, BCS class 3 की drug है, HLB क्या scale है इसका. All this by flowchart. Okay. So that is what my second point was. Revise your own notes first. Don't open new books. Focus on class notes. If you go for some coaching, coaching hand notes. Now this is the most, and you every person should do is use online test series. Mock test देना ही देना है. हमने दिया था 2011 में. The questions are, or the chapters from where questions are framed are almost same. So you have to refer last 10 years question paper. The previous 10 years question paper, the questions are almost similar. So you have to give the online test. अभी सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट या मॉक टेस्ट सीरीज देने से भी कुछ फायदा नहीं है. When you are giving the test, you have to analyze your performance. You have to see how would you analyze your accuracy. मतलब मैंने टैबलेट्स के ये 4 क्वेश्चंस किए हैं, मेरी कितनी एक्यूरेसी थी, मैं कितने 100% ये क्वेश्चंस कर पा रहा था. सो दिस इज योर मॉक टेस्ट में एक्यूरेसी. कौन से टॉपिक में अगर मुझे लगता है कि ये टैबलेट पैरामीटर्स में मेरा पूरा एक्यूरेट आंसर आ रहा है, नाउ यू कैन फोकस ऑन अनदर कैप्सूल, एरोजोल, पेरेंट्रल्स, ऑप्थेल्मिक्स, टाइम स्पेंट पर क्वेश्चन, वीक सब्जेक्ट एरिया. ये सब तुम्हें कब पता चलेगा? मॉक टेस्ट से. क्योंकि इफ यू आर नॉट गिविंग मॉक टेस्ट, यू आर ओनली स्टडिंग एंड स्टडिंग. तुम पता ही नहीं है जो तुम पढ़ रहे हो वेदर इट इज रिलेवेंट, whether you remember, whether you are able to analyze the question. Because question क्या रहेगा? Easy, medium, difficult. Easy questions जो होंगे वो highly scoring रहेंगे. That would contain 20 to 30% तुम्हारा, और either 30 to 40% होगा easy question रहेंगे. Direct पूछेंगे, classify this drug falls under which category. Direct, it would come as direct. Tablet में this is the diluent. So these are some of the direct question, easy question that you can opt for. Then there comes a category of medium, जिसमें थोड़ा हो सकता है घुमा के पूछे. वो questions कहाँ से आ सकते हैं? फिजिकल फार्मास्यूटिक्स से आ सकते हैं, बायो फार्मास्यूटिक्स से आ सकते हैं, SAR से आ सकते हैं, थोड़ा घुमा के पूछा जाए. So these are your medium. If you are 100% sure, you can go for it. अगर थोड़ा भी लग रहा है, you can opt for it. Now there is difficult question. These questions are specially designed for top rank. तो अगर तुम्हें लगता है जब तुम ये मॉक टेस्ट सीरीज दे रहे हो, इफ यू आर फॉलिंग बिलो 100, जो अभी अगर फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट है, दे शुड नॉट फॉल अंडर 100. बट इन सम केस इफ यू आर फॉलिंग अंडर 100 मार्क्स इन योर मॉक टेस्ट सीरीज, you should regularly make your notes, start studying, clearing your concept. Concept clearing is very important. ठीक है. If you are giving your mock test, you are falling under 150 to 250, you are having high chances of GPAT selection. In that case, तुमको क्या करना चाहिए is, जो भी तुमने अभी तक पढ़ा है, you are in right path. Go on revising your topic. अभी तुम जैसे पहले पूरा दिन एक टॉपिक पढ़ते थे, पूरा दिन एक टैबलेट पढ़ते थे, नाउ यू हैव टू स्टार्ट डूइंग टैबलेट इन 1 आवर्स, कैप्सूल इन 1 आवर्स. ईच टॉपिक तुमको एक एक घंटे में तुमको खत्म करना. नाउ एंड इफ यू आर 250 to 350 or 300, you are incoming top rankers. Only thing is more you have to focus. जो मीडियम वाले फोकस कर रहे थे, लाइक 150 to 250 रिविजन कर रहे थे, सेम रिविजन करना है, बट यू हैव टू इंक्रीज योर स्पीड, क्योंकि तुम्हें अलाइड सब्जेक्ट भी करने. इफ यू हैव टू कम इन टॉप 10 रैंक्स, only pharmaceutics, cognosy, ecology will not work for top rankers. You have to also do biochemistry in detail,
jurisprudence in detail. So for that you have to go revision very fast. पूरा सुटिक्स तुमको 2 घंटे में एक बार आईएएस के सामने से in last 15 days you have to move whole सुटिक्स, whole cognosy for 2 hours, whole cology, one particular topic, and then you will get a time for that allied subject. juris का revision आज कर लिया मैंने, biochem का enzyme का आज मैंने revision कर लिया. So this is how top rankers could do, and that you will know when you do the mock test. जब तक अब कुछ बच्चे, there are some student that say मैम पहले हम पढ़ तो लें, पहले हम रिवाइज तो कर लें, फिर हम mock test देंगे. But no, give one mock test per week and start solving previous year question paper. हर वीक में 2 या 3 क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर्स के कंप्लीट करो. Then revise that 3 question paper next week again, or either next 2 days again. रिविजन के लिए 2 दिन और हफ्ते में 3 तुमको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर करने ही करने, प्लस 1 मॉक टेस्ट. इवन इफ यू आर, हाँ हेलो, Madam, can you give me यस 2 minutes to introduce our course? Can you stop sharing? I यस want to यस यस introduce. Then you can share once again. Yeah, please. यस यस Yeah, student here, Dr. Bandoo Chatale, and I am last 10 years conducting GPAT Booster courses for guiding pharmacy student. Also, I conduct different workshops for faculty. Last 1 year, we have conducted a workshop on NMR interpretation, workshop on molecular modeling, workshop on the research proposal writing, grant writing, and so many workshop we conduct for faculty development program, like workshop on artificial intelligence in pharmacy, and so many workshop we are conducting. And recently, we have designed one wonderful course for a very reasonable cost for the B pharmacy student. That this is the this test. Can you see this screen, madam? यस यस Yeah. यस So this GPAT booster course we are going to conduct. We are conduct 50 lecture with 100 hour plus from the expert like myself, Dr. Bandhu Chatale. Then we have second expert, Dr. Maulik Vaja. He is a professor at Saraswati Institute of Pharmaceutical Sciences and is a researcher and entrepreneur. We have third mentor, Dr. Suredra. He is from NIPER pass out and he is currently working at Golgotha University. We have Dr. Bhushan Varpe. We have Mr. Payaam is currently pursuing his master from NIPER Mohali, and he also Air India ranked first in a recent exam that is AI IMS CRE 2025. So we have all ranker people for this course, and we kept this course only for 5,000. And if you are willing to join this, and we are conducting so many mock tests. Recently, we have conducted this mock test weekly. We are conducting weekly mock test of same to getting feeling of GPAT. So, guys, if you're willing to join, and you have other expert like now, we have today Dr. Prerna is there. So we have so many expert. We give invitation to give guide you. So if you're willing to join, then I am sharing link here. Then you can have. It is 5,000 rupees course, but if you join it in because we are going to start it from June 1st, and you can if you are in second year or third year, you can join it because we are covering everything for syllabus, basic things, and all that detail. If you are willing to, click on the link. And we have offer today. It is 4,500 rupees only. Later on, it may increase cost as per student registration and demand. And we also conduct so many mock tests weekly. Madam, we are conducting a weekly mock test, and that is designed by expert from the those are GPAT toppers and all that. So you can see we are sharing this, and we are sharing this all India in different places, different colleges. So you can see here, this is mock test we have conducted, and we have so many students given that mock test. So if you will, and it is free. So once you register with our course, we are going to get expert guidance, and you can able to do well. And then all is yours. So thank you, madam. You can take your session. Yeah.
Yeah, just one thing. Yashali, you have one question. You can free to ask. Yeah, Yashali. Yeah, at the end Yeah. you can ask. Yeah, we will discuss at the end. When madam will finish now, then we'll discuss the question and answer session. Okay? Yeah, madam, proceed. Mm. The slide visible? Yes, yes. Thank you. Okay. So as I was telling about mock test, so there are some students who are dicey कि मैम आई मीन TY हम अभी से क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करेंगे. स्टार्ट सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. मार्क योर स्ट्रेंथ. जब तक तुम क्वेश्चन पेपर नहीं करोगे तुम्हें तुम्हारी स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं पता चले. स्टार्ट सॉल्विंग इवन इफ यू डोंट नो 125 में से तुम्हें 10 क्वेश्चन भी आए बट यू नो कि दैट ए पर्टिकुलर एरिया इज योर स्ट्रेंथ. यू कैन मार्क इट एज योर स्ट्रेंथ कि भाई अगर टैबलेट से आ रहा है या फिर मुझे कोलॉजी में एंटी कैंसर से आ रहा है, एंटी डायबिटिक से आ रहा है, ANS से आ रहा है तो मुझे क्वेश्चंस बन रहे हैं. पर ये पीछे के में से नहीं बन रहे और इससे मेजर पार्ट क्वेश्चन आ रहा है और ये मेरी स्ट्रेंथ भी है. तो देन यू विल गेट मोटिवेटेड ऑल्सो. इन सम केस कि यार 10 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, TY को तो डीमोटिवेट होने का मतलब नहीं. इफ यू आर इन फाइनल ईयर यू विल नो वेयर यू स्टैंड. इवन इफ इट इज 15 days तुमको पता है कि ये मेरे स्ट्रेंथ है, ये मेरा वीकनेस है. ये वाला क्वेश्चन पे मैं अगर घुमा के पूछते मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ. और क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी है. टैबलेट में भी ऐसे कुछ एरियाज है जहां पे वो घुमा के पूछते हैं. दैट फॉल्स इनटू डिफिकल्ट एरिया. सो वो क्वेश्चंस मुझे टच ही नहीं करना है व्हाइल आई एम डूइंग माय जीपैट एग्जाम. वो तभी पता चलेगा व्हेन यू डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और यू गो फॉर अ मॉक टेस्ट. एंड हाउ वुड यू रिव्यू? आई हैव टोल्ड यू एनालाइज रॉन्ग आंसर. जो भी तुम्हारे रॉन्ग आंसर होंगे उसको एनालाइज करो. एंड आई एम टेलिंग इफ इवन इफ यू हैव डन, तुम बोलो मैंने मैम 10 years के क्वेश्चन पेपर पूरा एक हफ्ते में ही फिनिश कर दिया. वेल एंड गुड. यू हैव टू रिवाइज. यू हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग. तुमने एक बार ये क्वेश्चन रॉन्ग किया था, सेकंड बार वो क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए. अगर हो रहा है उसको दूसरी बार फिर से रिवाइज करो. अगर तुम एक हफ्ते में 10 years के क्वेश्चन पेपर फिनिश कर पा रहे हो, रिवाइज नेक्स्ट वीक अगेन. टिल यू आर ऑप्टिंग फॉर जीपैट यू हैव टू रिवाइज. अगर तुम फाइनल ईयर में हो, ये साल में ही तुम्हारा कट टू कट देना है, गो फॉर मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट तुमको अभी तुम्हारी सिचुएशन बता देगा. इट इज नॉट ऑलवेज कि तुम्हारे मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे, यू फॉल इन 150 to 250 तो तुम हम जीपैट में भी उतना स्कोर करोगे. नो. इन मॉक टेस्ट वी नीड टू इंक्रीज योर लेवल. तो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है. वेर एज इन जीपैट समटाइम्स इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन. इट मे हैपन तुम्हारे मॉक टेस्ट में 150 मार्क्स आ रहे थे, वहां जाके तुम्हारे 200 मार्क्स. सो इट डिपेंड्स. बट मॉक टेस्ट इज लेवल अप. हम थोड़ा डिफिकल्ट बनाते हैं. बट दीज मॉक टेस्ट आर बाय स्टडिंग पुराने सारे years के क्वेश्चन पेपर, द सब्जेक्ट एरियाज फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन कम्स. So for TY, I would suggest if you don't want to give mock test, please refer previous year's question paper. You have to बिना previous year question paper के अगर तुम GPAT देने जा रहे हो, you are just wasting your time and money. Do previous year question paper. Do read. अभी तुम्हारे पास जो स्ट्रेंथ है, तुमने TY में अभी गए हो, तुम्हारे पास अभी कुछ पता नहीं है क्या कहाँ से स्टार्ट करूं. स्टार्ट विथ सुटेक्स कोलॉजी. जो तुम्हें बहुत सारे बच्चों को केमिस्ट्री फिलहाल टफ कर. तो इफ यू थिंक कि मैम मुझे सुटिक्स अच्छे से आता है तो पहले सुटिक्स के कोर टॉपिक्स रिवाइज करो. ऐसे नहीं कि तुम कॉस्मेटिक्स भी पढ़ रहे हो, बायोफार्मास्यूटिक्स पढ़ रहे हो, पर मेन कोर टॉपिक्स तुमने पढ़ा ही नहीं. प्री फॉर्मुलेशन नहीं पढ़ा, टैबलेट नहीं पढ़ा, कैप्सूल नहीं पढ़ा. वो सब छोड़ के तुमने कॉस्मेटिक पढ़ रहे हो, जूरिस पढ़ रहे हो, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो. नो. Start with your priority. Give priority to high weightage topic. Go for tablet, pre-formulation, capsule, then monophasic, emulsion, parenterals, ophthalmic. Step by step you have to go with your preparation. अगर तुम एक हफ्ते में सपोज यूनिटी एक हफ्ते में तुमने सुटिक्स कर लिया, ओवरव्यू कर लिया, नेक्स्ट वीक में तुम या फिर नेक्स्ट 2 days में तुम कोलॉजी, 2 days में केमिस्ट्री एंड देन लास्ट 2 days कोर्स ये किया. उसके बाद एवरी वीक में 2 या 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर गो थ्रू इट. नहीं आ रहा है इट्स ओके, बट अपनी स्ट्रेंथ लिख के रखो, वीकनेस लिख के रखो.
This will help you maybe for next year. For final year who is getting less marks, एक चीज आई वुड से, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, मॉक टेस्ट से तुम अपनी स्ट्रेंथ लिखो, अपनी वीकनेस लिखो, और अगर ऐसा करोगे तो तुम स्ट्रेंथ को 10 बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं, अपनी वीकनेस पे ज्यादा फोकस करो. अगर तुमको लग रहा है कि मुझे मेडिसिनल केमिस्ट्री में एसएआर हो ही नहीं रहा है, मुझसे सिंथेसिस हो ही नहीं रहा है, सिट विथ 2 और 3 फ्रेंड्स. तुम 3-4 फ्रेंड्स के साथ बैठो, साथ में बैठ के तुम स्ट्रक्चर बनाओ, एक दूसरे से सिंथेसिस रिवीजन करो, एक दूसरे से कोलॉजी के साथ में तुम उसका क्लासिफिकेशन पूछो, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठो और बोलो कि चल यार ये ड्रग बता कहाँ से आता है, चल तुझे इसकी वो स्ट्रक्चर पता है क्या, साइमल्टेनियसली ड्रॉ करो, किसी को भी नहीं आ रहा है बुक ओपन करो और नोट्स ओपन करो, वहां से स्ट्रक्चर बनाओ. अब स्ट्रक्चर को ही देख के तुम्हें उसकी सिंथेसिस आनी चाहिए. नहीं आ रहा है, 4-5 फ्रेंड्स साथ में बैठो और साथ में ग्रुप स्टडी में, आई वुड से ग्रुप स्टडीज वेरी मच हेल्पफुल इन लास्ट 15 डेज. हाँ कुछ बच्चे हैं कि हमें डिस्टर्ब होता है, हम साथ में बैठ के नहीं कर सकते. गुड, यू क्लोज योर सेल्फ इन रूम, कीप योर फोन अवे. फोन इज द मेजर डिस्ट्रैक्शन. यार चलो 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम देख लेता हूँ, 5 मिनट करते करते 1 घंटा गया. उस 1 घंटे में तुमने सुटिक्स का टैबलेट कैप्सूल रिवाइज कर लिया होता, या ऑप्थेल्मिक रिवाइज कर लिया होता, या केमिस्ट्री का हमने कैंसर पढ़ लिया होता, डायबिटिक पढ़ लिया होता, एएनएस पढ़ लिया होता. कीप योर फोन अवे. जब तक कुछ अर्जेंसी नहीं है, डोंट सी ऑन योर फोन, गिव इट टू योर मॉम कि मॉम अगर अर्जेंसी में किसी का कॉल आए टेल मी. ओनली 15 डेज की बात है, देन इट इज गॉन. You may go into your life. बाद में पछतावा करने से अच्छा focus on this 15 days. Focus on your core topics. साथ में अगर फ्रेंड्स बैठ के पढ़ रहे हैं तो कुछ, आज अरे मैंने कैंसर पढ़ा है, तू एएनएस पढ़ ले, तू सीएनएस पढ़ ले, मैं तुझे कैंसर बताता हूँ कि ये क्लासिफिकेशन है, ऐसा स्ट्रक्चर है, ये उसकी सिंथेसिस है, एसएआर ये, तू मुझे इसका समझा देना. इससे क्या होगा, यू आर साइमल्टेनियसली, जिसके जो कंसेप्ट क्लियर है वो उसको बहुत डिटेल में पढ़ रहा है, और तुमको विद इन 15-20 मिनट्स यू आर गेटिंग रिविजन. कोई तुम्हें समझा रहा है, यू आर गेटिंग रिवाइज, वो तुमसे रिविजन कर रहा है. ऐसे करके तुम्हारे 4 फ्रेंड से तुम्हारे 4 टॉपिक्स हो रहे हैं इन 15 डेज. अगर तुमने ऐसे 2 दिन में 4 टॉपिक रिवाइज कर लिए, साथ में बैठ के कोलॉजी और केमिस्ट्री कर लिया, you are getting 45 questions आराम से. But only thing is you have to strategize. So this is analyze your wrong answer, maintain a mock test log book बना के रखो for TY स्पेशली. अगर तुम अभी दे रहे हो तो मॉक टेस्ट या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एक अपनी बुक बना के रखो. ये मेरे रॉन्ग आंसर्स हो रहे हैं, ये इस अभी मैंने सेकेंड टाइम जब रिवीजन किया तो ये क्वेश्चंस मुझसे आराम से अभी बन रहे हैं, तो ये अभी मेरी स्ट्रेंथ के रीजन में जा रहा है. इन रीजन्स में मुझे फिर भी काम करना है. बायोफार्मास्यूटिक्स या फाइफार्म के मुझे न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे हैं, ये मेरा ग्रीन एरिया है, रेड एरिया है, मैं को इस पे फिर से रिविजन करना. ट्रैक एक्यूरेसी एंड स्पीड. सो आई वुड से, मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है जो मॉक टेस्ट या ऐसे टेस्ट दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 50 मिनट्स में हो रहा है, हाँ 1 आवर में हो रहा है. नो, इट इज नॉट पॉसिबल. इतना तो तुम्हें पढ़ने में जाएगा. तो आई वुड से गो फॉर एक्यूरेसी ओवर योर स्पीड. जल्दी जल्दी करने के चक्कर में बहुत सारे जो ट्विस्टेड क्वेश्चन आते हैं वो हमसे देखना ही, वी जस्ट फॉरगॉट दैट. अंडरलाइन करो जहाँ पे नॉट और एक्सेप्ट दिया है, कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, हम डायरेक्ट पढ़ के हमारे दिमाग में प्रिज्यूम्ड रहता है शायद हमने ये प्रीवियस ईयर में देखा था, ये ऐसे आया था, बट फॉर दिस ईयर दे मे हैव डन एक्सेप्ट दिस ड्रग or that drug. So just underline that confusing question, then you are more clear about that question. So this is again the summary. No topic wise revision. Topic wise नहीं कर सकते for last 15 days. Who are in falling in 150 to 250, 200 to 300, ये लोगों को topic wise नहीं जाना पड़ेगा. एक साथ सुटिक्स का रिवीजन कर लिया फ्लो चार्ट से फटाफट, एक साथ कोलॉजी का रिवीजन कर लिया, एक साथ कोग्नोसी का, क्योंकि अभी लास्ट 15 डेज रिवीजन. क्वेश्चन पेपर टाइम फॉर सब्जेक्ट वाइज, हर एक सब्जेक्ट को पर्टिकुलर टाइम. डेली 1 मॉडल पेपर, लास्ट ईयर लेस 10 ईयर क्वेश्चन पेपर एंड फॉलो योर नोट्स. अभी देर इज नो टाइम टू ओपन बुक्स एंड रिवाइज, ओनली योर नोट्स इज इनफ. इफ यू हैव नोट्स, यू हैव, यू मस्ट, अगर फाइनल ईयर में अभी देने वाले हो तो तुम्हारे पास नोट्स होगा ही, उसी को रिवाइज करो, उसी को रिवाइज करो.
Don't open book. This I was telling about easy question जो direct fact based आते हैं, one line answers आते हैं, जो 50 to 45 to 50% इससे आते हैं. That is your drug of choice हो गया, as I've told you, classification. कुछ enzyme को enzyme के बारे में question आता है. Constituents, moderate यानी कि conceptual base, as I've told you, concept लगता है उसमें. Needs understanding, application. ये ज्यादा पार्ट फिजिकल फार्मेसी से, न्यूमेरिकल से आता है या फिर एनालिसिस से आते हैं. ये वाले जो मॉडरेट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, यूवी, एनएमआर, आईआर से आएंगे ये वाले. ये 30 to 35%. डिफिकल्ट क्वेश्चन आर 15 to 20%. दीज क्वेश्चंस आर डिजाइन फॉर रैंकर्स. अगर रैंकर तुम समझ रहे हो कि तुम्हारा 250 to 300 है, तुम डिफिकल्ट क्वेश्चन पे फोकस कर सकते हो. अगर तुम्हारे डिफिकल्टी 15 to 20% है, 4-5 क्वेश्चन जो आएंगे, अगर तुमने स्कोर किया, यू आर इन टॉप 10. वो कौन कौन से होंगे? मल्टी स्टेप रीजनिंग, यानी एसएआर वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना, दैट कम्स अंडर डिफिकल्ट क्वेश्चन. इंटीग्रेशन ऑफ कंफ्यूजिंग ऑप्शंस, यानी एक ही ऑप्शन दो जगह दिया है. स्टीरियो केमिस्ट्री में आर एस, एक स्ट्रक्चर बना दिया अमीनो एसिड का, उससे पूछेंगे आर एस दिस आर एस. जैसे 4-5 क्वेश्चन जो आपको ऑप्शन जो आपको सेम लगेंगे, confusing है, this comes under difficult category. If you're very sure, go for it. If you don't know, don't touch that question, क्योंकि जो मिले हैं उसमें से भी एक मार्क्स कट जाएगा. So that comes under stereochemistry, synthetic pathway, bioavailability cases. These are example. जैसे कोग्नोसी से, I have told you कोग्नोसी अभी हमको डिफिकल्ट लगता है, बट मार्क्स उसमें से मिल जाते हैं. क्यों? क्योंकि उसमें एक प्लांट सोर्स दिया रहेगा, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पूछा जाता है. मेजरली यही क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम होते हैं. अगर आपको लग रहा है कि मैम ऐसे ही बोल रही है, यू जस्ट ओपन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ये सब मैंने जो पीपीटीज बनाई है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर पैटर्न देख के बनाया है. फार्माकोलॉजी, ड्रग ऑफ चॉइस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. एज आई टोल्ड यू, क्लासिफिकेशन. बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं? साइड इफेक्ट में कंफ्यूज होते हैं. बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं? मैकेनिज्म में कंफ्यूज होते हैं. क्लासिफिकेशन में तो कंफ्यूजन का कोई बात ही नहीं है. तो क्लासिफिकेशन अगर तुमको पता है, दिस फॉल्स अंडर मिटोप्रोलोल, फॉल्स अंडर विच कैटेगरी, वो तुमको पता होना चाहिए. दैट इज इजी, डायरेक्ट. मेडिसिनल केमिस्ट्री में मैच द ड्रग विद इट्स स्ट्रक्चर या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. एनालिसिस में आइडेंटिफाई लैम्डा, एज आई टोल्ड यू, लैम्डा मैक्स वाला जो वुडवर्ड फिशर रूल, ये डायरेक्ट इजी क्वेश्चन है. दिया इसका वुडवर्ड फिशर रूल मतलब लैम्डा मैक्स निकालो. तो अगर ये आता है तो आता है, तुक्का नहीं लगा पाओगे इसमें. नाउ मॉडरेट लेवल में सुटिक्स में क्या आएगा? कैलकुलेशन ऑफ डोज, हाफ लाइफ, बायोबिलिटी. फार्माकोलॉजी में क्लासिफाई ड्रग बाय रिसेप्टर और एडवर्ड्स इफेक्ट. एज आई हैव टोल्ड यू, एडवर्ड्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट ये थोड़े घुमा के पूछ लेते हैं. केमिस्ट्री में देयर इज प्रिडिक्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन. एज आई टोल्ड यू, सिंथेसिस में थोड़ा पूछ सकते हैं. माइक्रोबायोलॉजी में फंक्शन ऑफ स्टेरिलाइजेशन मेथड. देन देयर इज डिफिकल्ट लेवल, जो रैंकर्स के क्वेश्चन रहते हैं, वो रहते हैं मल्टी स्टेप सिंथेसिस या रेट्रोसिंथेसिस पूछ लेते. फार्मास्यूटिक्स में कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल या कंपार्टमेंटल मॉडल. बायोफार्मास्यूटिक में इंटीग्रेशन ऑफ अब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन, फॉर्मुलेशन. इंटरडिसिप्लिनरी में कंबाइंड फार्माकोलॉजी और केमिस्ट्री साथ में पूछ लेंगे. These are some difficult level, जो अगर तुमको नहीं आ रहे, don't go for it. अभी tips for student is easy questions, scoring होते हैं, revise from your notes. Moderate question, make और break होते हैं, practice MCQ with explanation. यानी अगर तुम mock test दे रहे हो, तुम 150-200 की रेंज में हो, तो ये जो मॉडरेट क्वेश्चन है ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर सिलेक्शन. क्योंकि इजी क्वेश्चन तो जो नए बिगिनर्स हैं वो भी करेंगे, मे बी उनका सही हो, बट इफ यू वांट टू गेट सिलेक्टेड, थोड़ी सी अच्छी रैंक आए, उसके लिए तुम्हें मॉडरेट क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे. वो कैसे बनेंगे? प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके. डिफिकल्ट क्वेश्चन ये थोड़े टाइम ट्रैपिंग होती है. जो 3 घंटा दिया ये ऐसे ही नहीं दिया. ये जो घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये डिफिकल्ट क्वेश्चन में आते हैं. तो एज आई हैव टोल्ड यू, अटेम्प्ट ओनली इफ यू आर कॉन्फिडेंट. सो फॉर लास्ट 15 डेज जो फाइनल ईयर में बच्चे जो अभी 6, 7, 8, 9 महीने से इतनी तैयारी कर रहे हैं, फॉर लास्ट टाइम 15 डेज का, स्टे हेल्दी, बैलेंस्ड, sleep minimum 6 to 7 hours, use Pomodoro method.
कि अभी एक नया मेथड आया है, हमारे टाइम पे तो नहीं था। हमारे टाइम पे जब हम क्लासेस में जाते थे तो हमको बस ये बोला जाता था, पढ़ो पढ़ो बस, कोई टेक्निक नहीं बताते थे। बट नाउ डेज इट इज लाइक 25 मिनट्स तुम फोकसली पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर 25 मिनट्स पढ़ो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर 2 आवर्स के बाद टेक अ 30 मिनट ब्रेक। यू कैन गो आउट विद योर फ्रेंड्स, डोंट यूज योर फोन इन दिस ब्रेक। ये जो 5 मिनट का ब्रेक लिया है ये तुम्हारे लिए दिया है, फोन के लिए नहीं। 5 मिनट में तुम अपने पेरेंट्स से बात करो, बहन से बात करो, फ्रेंड से बात करो, थोड़ा बाहर चक्कर मार के और फिर से पढ़ने बैठ जाओ। दिस इज फॉर लास्ट 15 डेज। क्योंकि ये तुमने पढ़ लिया तो तुम्हारी लाइफ सेट है, नहीं पढ़ा तो फिर तुम्हें रिग्रेट होगा कि यार शायद मैं तभी पढ़ लेता। तो 5 मिनट का ब्रेक सिर्फ तुम्हारे लिए। जो 30 मिनट्स का ब्रेक है, अवॉइड यूजिंग फोन, बिकॉज वो 30 मिनट्स कब 1 और 2 आवर्स चला जाता है वो हमें पता नहीं चलता है। ईट लाइट, स्टे हाइड्रेटेड। ओके, कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं आजकल इज स्टडी विदाउट प्लान, एज आई हैव टोल्ड यू। कि जो भी फाइनल ईयर में भी है, जिसने पढ़ चुका है, उसको लगता है यार मैंने तो सब पढ़ा है, मुझे सब आता है। नो, देयर शुड बी अ प्लान। अगर तुमको लगता है तुमने ये टॉपिक पढ़ा है, रिविजन करो, टेस्ट दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करो, अपनी मम्मी या फ्रेंड्स को बोलो यार ये देख मैंने ये सही किया है ना, ये देख मुझे अभी इतने, किसी को अपडेटेड रखो, सो दैट यू कैन, यू कैन नॉट चीट विद योर सेल्फ। बट हम अपने माइंड में यही करते हैं कि यार हो गया है ना, कर लिया है मैंने, हो जाएगा। बट यू, इफ यू कीप योर फ्रेंड अपडेटेड, ये देख यार मेरे इतने मार्क्स आए अभी, नेक्स्ट टाइम मैं इससे ज्यादा लाऊंगा, तो ये अगर किसी को पता है तो तुम जरूर करोगे, तुम खुद को फूल कर लेते हो। इग्नोरिंग मॉक टेस्ट एंड टाइम बेस्ड फैक्टर्स, रॉट मेमोराइजेशन, व्हाट डज दिस मीन इज सिर्फ याद करना, सिर्फ याद करना नहीं। तुमको अगर प्रिपरेशन कर रहे हो जीपैट की, वो एमफार्म के लिए है, तो वहां मेमोराइजेशन नहीं चलेगा, तुमको समझ के हर चीज करनी पड़ेगी। स्ट्रेसिंग ओवर लो स्कोर, कंसिस्टेंसी और परफेक्शन, सिर्फ प्रेशराइज होने से, स्ट्रेस होने से कुछ भी नहीं होगा। नहीं आ रहा है, इट्स ओके। मेरे को केमिस्ट्री नहीं बन रहा है, ठीक है, आई मे फोकस ऑन कोलॉजी ज्यादा, मैं केमिस्ट्री भी पढ़ूंगा, पर मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है सुटिक्स, मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है कोलॉजी, मैं इस पे ज्यादा करूंगा, इससे ज्यादा स्कोर लाने की कोशिश करूंगा। केमिस्ट्री को पर आप छोड़ नहीं सकते, कोई भी सब्जेक्ट आप छोड़ नहीं सकते। करना तो सब है, ये 4-5 कोर्स, जो 4 कोर्स सब्जेक्ट बताए करना तो है। पर ठीक है, इसमें कम स्कोर आ रहा है, ठीक है, मैं इसके क्वेश्चन अगर 100% आएंगे तो टिक करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। केमिस्ट्री का एसएआर का क्वेश्चन आया, मुझे 100%, अगर मैंने ये बहुत अच्छे से पढ़ा एंटी कैंसर तो ही मैं सॉल्व करूंगा, नहीं तो मैं ये ऑप्ट नहीं करूंगी। बट एटलीस्ट बाकी के जो मैंने पढ़े हैं, सुटिक्स, मुझे अगर मैं सिर्फ बोल रहा हूँ मेरे सुटिक्स बहुत अच्छा है, तो मेरे को सुटिक्स के फिर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरे को 10 के 10 सही करना, तभी तो मेरे 40 मार्क्स आएंगे। अगर मैं 10 क्वेश्चन सही करूंगी तभी तो 40 मार्क्स आएंगे। कोलॉजी से अगर मेरे को 10 क्वेश्चन आए, मैं 10 के 10 सही करूंगा, तब 40 आएंगे, 80 मार्क्स हुए अभी भी मेरे। तो यू हैव टू सी दीज आर द एरियाज वे यू हैव टू फोकस। अगर तुमको लगता है कि इसमें कम है, अगर मुझे लगता है कि मुझे सुटेक्स वीकनेस है यार, मुझसे याद ही नहीं होती है चीजें, तो फोकस ऑन थिंग्स दैट यू कैन डू। मतलब केमिस्ट्री वाला जो तुमको लिख के याद हो सके, मतलब जो तुम पढ़ के तुम्हें कुछ कंसेप्शन लगे। So this is the daily plan just suggested. If you want to follow, you can follow for last 15 days. Otherwise, you can make a, it was मेरे लिए जो सही है वो मे बी आपके लिए सही नहीं हो, जो मैं फॉलो करती हूँ वो आपके लिए सही नहीं हो। आप अपना प्लान बनाओ, अपने हिसाब से बनाओ। दिस इज जनरलाइज प्लान कि 6:30 to 7 यू कैन डू अ क्विक रिविजन फ्रॉम फॉर्मूला शीट। फॉर्मूला शीट इज वो जो मैंने फ्लो चार्ट बनाने को बोला, फ्लो चार्ट बनाया है मैंने, टैबलेट का सब कुछ यहाँ से देख लिया, मैंने फ्लो चार्ट बनाया, क्लासिफिकेशन का सब कुछ देख लिया। दिस इज योर फॉर्मूला शीट। 7 to 9 फार्माकोलॉजी, 1 टॉपिक प्लस एमसीक्यू। हर 15 डेज में अगर आपने किया तो आपके सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। एमसीक्यू कर रहे हो तो आपके क्वेश्चन पेपर हो रहे हैं साइमल्टेनियस 2 घंटे में। देन 10 to 12 सुटेक्स टॉपिक, थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। 1 to 2 1 से 2 अगर आप केमिस्ट्री रिविजन कर रहे हो, 3 से 4 मॉक टेस्ट दे रहे हो, 5 से 6 एनालिसिस पर प्लस बायोकेम, से 8 to 9 जनरल एप्टीट्यूड और डिस्कशन ग्रुप। इट इज अप टू यू, आप फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर रहे हो, जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस कर रहे हो,
Then there are certain success stories, as Ankita Joshi was Air 21 in GPAT 2023. Why I'm giving these success story? Because these are recent. You can connect them more. हम लोग के टाइम पे फोन का कुछ भी प्रेवलेंस नहीं था. We were not distracted by our phone. It was just our books. हम हमें क्या डिस्ट्रैक्टेड करता था यार, फ्रेंड की पार्टी है जाना है. हमें क्या डिस्ट्रैक्ट करता था, अरे यार आज हमारे रिलेटिव्स की शादी है, हमारा ये डिस्ट्रैक्शन था. नाउ डेज देर आर लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन इन अ स्टूडेंट्स लाइफ. फोन है, इंस्टा है, एवरीथिंग, हर छोटी चीज है. So these are some success story like Ankita Joshi, Air 21. She started her preparation in June, solved 3 mock tests weekly. हर हफ्ते इसमें 3 mock test करती थी. Then there is Ravi Verma, Air 89, focused on solving previous 10 years paper. So takeaway is start early, practice regularly, stay confident. So these were, देखो इसने कितने पहले से स्टार्ट किया और किया सबने वही है. Revision, mock test, question papers, regularly they were practicing. ये आप कॉन्फिडेंस देते हैं. वो जो एंड मौके पे प्रैक्टिस करते हैं ना, उनको इजी क्वेश्चन भी डिफिकल्ट लगने लगते हैं, क्योंकि उनमें उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है कि अरे यार ये मेटोप्रोलॉल कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, यार मैंने पढ़ा तो था पर मुझे कंफ्यूज क्यों हो रहा है. दिस कंफ्यूजन, दिस इज लेस lack of confidence. This is because you haven't practiced much. तुमने पढ़ा, एक बार पढ़ के छोड़ दिया, रिविजन नहीं किया. तुमने रिविजन किया पर मॉक टेस्ट किया ही नहीं, तो तुमको पता नहीं था कैसे क्वेश्चन आ रहा है. मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं करके, अगर तुमने 10 years के क्वेश्चन पेपर किया है, मैं श्योर 50% क्वालिफाई तो हो सकते हो जीपैट. अगर तुमने 50 years के क्वेश्चन पेपर पूरे अच्छे से करके गए, नो बडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्वालिफिकेशन. रैंक ऑब्वियसली नहीं आ सकती सिर्फ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से, पर तुम क्वालिफाई तो 100% कर सकते हो. So now I would end my session. This was all about it. I would open the platform for any doubts, question, query. Yeah. Before going question and answer session, I would like to request you to, if it is visual, can you make your camera on, please? If it is visible, I want one official purpose, one screenshot. Yeah. Can you make camera on, guys? Or I request if it is visible, make your camera on. Then we have question answer session. Guys, can you make camera on? Is it visible? Yeah. Just for a second. Okay, if not visible, then yeah, no, if it is not visible, then I will take screenshot. Yeah, smile, madam, small. Yeah. Okay, there was one question asked by one audience whether non-resident Indian is eligible for GPAT exam. That's the answer I will give within a second. Just give me 1 second. I am saving this screenshot. Yeah. So before going for question answer session, I would like to express my gratitude for our esteemed speaker, Dr. Prerna Madam. So, Madam has given her valuable Sunday time with us to guide us. That's greatness, actually. Okay. So, Madam, we are expressing your gratitude for your valuable time and such a wonderful, smart way to qualify exam. Okay. So, in behalf of Springwell Pharma Private Limited and Anandi Foundation, I take opportunity to express my heartfelt gratitude for giving your valuable time. Thank you so much, guys. Now, session will be open for question and answer.